Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jam Vishnupad Paramahamsa Parabrajaga Acharya Ashtakarashta Shri Srimad Abhay Charan Bhaktivedanta Samprabhupada ki Ananta Koti Vaishnavrinda ki Nama Acharya Shahridas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Radha Kund Shyama Kund Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Mayapur Dham ki Ganga Mai ki Yamuna Mai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Jai Nitai Gaur Pramanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories are to Shri Gaur and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 3, and text 2 to 10. So we will repeat the verse 2, and then we can read all the translations up to the 10. Satepe Mandara Dronya Tapaha Paramadarunam Urdvabahur Nabho Drishtihi Padangustham Shrishta Vinaha.
Padangushtashtrishtavaneh Satepe mandaradronyam Tapak paramadarunam Urvabahurnabhodrishte Padangushtashtrishtavaneh Satepe mandaradronyam Tapak paramadarunam Urdvabahurnabhodrishte Padangushtashtritavaneh Satepe mandaradronyam Tapak paramadarunam Urdvabahurnabhodrishte Padangushtashtritavaneh or by word you can do, and then the translations all the way till 10. उसने हिरण्यकशिपु ने तेरे संपन्न किया मंदरद्रोण्याम मंदर पर्वत की घाटी में तपस्या परम अत्यधिक दारुणम कठिन ऊर्ध्व ऊपर उठाए बाहु बाहें नभः आकाश की ओर दृष्टि अपनी दृष्टि पाद अंगुष्ठ अपने पाँव के अंगूठों से आश्रित सहारा लेकर अवनिहि पृथ्वी पर अनुवाद हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पाँव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु ने जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे अपने अपने घरों को लौट गए। चौथा श्लोक। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोगों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो गए। 5वां श्लोक।
उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र उद्वेलित हुए थे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत थरथराने लगी और तारे तथा ग्रह टूट कर गिर पड़े। सारी दिशाएं धधक उठी थी। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहाँ उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से उसके शिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते। अतः हम आपके पास आए हैं। 7वां श्लोक। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझें तो इन सारे उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा था। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन लें। श्लोक संख्या 9-10। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा जी ने अपने उच्च पद कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतः मैं ऐसी ही तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। तात्पर्य: हिरण्यकशिपु का संकल्प ब्रह्मा जी के पद को पा लेना था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ थी, जैसा कि भगवद गीता 8वें अध्याय 7वें श्लोक में पुष्टि की गई है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के तुल्य है। ब्रह्मा की आयु अत्यंत दीर्घ है। फलस्वरूप हिरण्यकशिपु के लिए उनका पद प्राप्त कर सकना असंभव था। फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत हैं, अतः यदि वह उस पद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता, तो वह जन्म जन्मांतर तपस्या करता रहेगा, जिससे कभी न कभी उसे वह पद प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। So yeah, we see how Hiranyakashipu has very elaborate plan to become immortal. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु अमर बनने की योजना बना रहे हैं। And actually, no, that's not the only thing he wanted. He wanted to be the most powerful, the supreme person in the universe. वह केवल अमर ही नहीं बनना चाहता था, परंतु पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। But he wasn't very well informed because he thought that Brahma is the supreme person who is immortal. लेकिन उनका ज्ञान पूर्ण नहीं था क्योंकि वे सोचते थे कि ब्रह्मांड के अमर व्यक्ति हैं। So, but Brahma, even though he lives for long duration of life, he is not immortal. किंतु ब्रह्मा, हालांकि उनकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन वो अमर नहीं है। So, but nonetheless, he wanted to occupy that post. लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करना चाहता था। But when something is attempted by somebody, to occupy some post which he is not qualified for, यदि कोई व्यक्ति किसी पद के लिए अयोग्य है लेकिन उसे प्राप्त करना चाहता है, then things don't work out very well. स्थिति अच्छी नहीं होती, चीजें कई तरीके से काम नहीं करती।
So there is always a higher arrangement. तो हमेशा जो है उच्च व्यवस्था के अनुसार कार्य होता है. And the arrangement is God. और वह उच्च व्यवस्था भगवान द्वारा. So He has planned, and it's going to work out according to His plan. और भगवान की कुछ योजनाएं हैं और वही योजनाएं ही कार्यरत होंगी. We may think that because we have some little independence, so then we can execute our plans, but they don't work. हम सोच सकते हैं कि हमारी कुछ स्वतंत्रता है और हमारी योजनाएं कार्यरत होंगी, लेकिन हमारी योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं होते. Look at the Pandavas, right? Or Duryodhana. He has a plan. पांडवों दुर्योधन को हम देख सकते हैं और उनकी कुछ योजना है. And now he had a plan to eliminate the Pandavas. Now there was the house of luck, to burn them down. दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को लाक्षागृह में मार दिया जाए. To poison them. उनको विष दे दिया जाए. To destroy Krishna. कृष्ण को मार दिया जाए. So many plans he had. बहुत सारी योजनाएं थी. But thing didn't work out. लेकिन उसकी योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं हुआ. But Krishna's plan, from the very beginning, he knew what he wants. और कृष्ण की योजना शुरू से ही वे जानते थे वे क्या करना चाहते हैं. The Pandavas will be the emperors, and Yudhishthira will be the emperor, and the Kauravas will be eliminated. भगवान की योजना थी कि युधिष्ठिर महाराज बनेंगे और बाकी कौरव जो है वो मृत्यु को प्राप्त होंगे. So if we learn to go with the plan of God, then we will be successful. यदि हम भगवान की योजना के अनुसार कार्य करेंगे तो हम सफल होंगे. If we try to do something against God, we will be eliminated. यदि हम भगवान की योजना के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम मृत्यु प्राप्त करेंगे. So we have to learn what is the way, what is the plan of the Lord. तो हमें कैसे पता पड़ेगा भगवान की योजना क्या है? Then how do we come to know that? इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? Then we inquire, right? Guru Sadhu Shastra. गुरु साधु शास्त्र से जिज्ञासा करते हैं. And then we know what to do. और फिर हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है. Then Varnashrama Dharma, rules and regulations and the duties, right? They are prescribed for every Varna, for every ashrama. तो वर्णाश्रम धर्म में सबके लिए नियम एवं दायित्व बताए गए हैं. So this is the representation of God. No, He made it. Who else made it? तो यह भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और कौन बनाए हैं नियमों को. So following these, then we know what we are supposed to do in whatever ashrama we may be situated. तो इनका पालन करने से हमें पता होगा कि हमें क्या करना है. किस भी आश्रम में स्थित हो हमें पता होगा. If we follow what we are supposed to do, then the consciousness will be purified. यदि जो हमसे अपेक्षित है उसका पालन करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी. When the consciousness is purified, then to accept Krishna consciousness, then it's easy. जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तो कृष्ण भावामृत को स्वीकार करना आसान होगा. And then we can easily apply whatever we do in Krishna consciousness. फिर हम कृष्ण भावामृत में चीजों को नियोजित कर सकते हैं. But if we are trying to do something different from Krishna consciousness, then we will fail. लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत से कुछ भिन्न योजना बना रहे हैं तो हम असफल होंगे. And for some time, you may be very, materially successful. You may be famous. कुछ समय के लिए हो सकता है भौतिक रूप से सफल हों. But it's not going to give you satisfaction. It's not going to give you happiness.
लेकिन वह आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त कराएगा, खुशी नहीं दिलाएगा। So there is no point of trying for it. इसलिए इसके लिए प्रयास करना बेतुका है। We should stick to our duties. हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना। But people don't want to do that. लेकिन लोग ऐसा करना नहीं चाहते। They think that I can do more than what it's allotted for me. वे सोचते हैं कि जो मेरे लिए रखा गया है उससे ज़्यादा चाहिए। I am in control of my karma. मैं अपने कर्मों का नियंता हूँ। No, but that's very foolish. लेकिन यह मूर्खतापूर्ण विचार है। But that's how it happens, that people just try to work hard to make money, and then they think that I'm successful. तो लोग बहुत प्रयास करते हैं धन अर्जन करने का और इस प्रकार से वो अपने आप को सफल समझते हैं। But then all they get into, all they experience the pavarga. लेकिन किंतु उनका जो अनुभव जो होता है केवल पावर्ग होता है। You know what's pavarga, no? आप सब लोग जानते हैं पावर्ग क्या है? Okay. Papabhabhama. Right? That's pavarga. पावर्ग में 5 अक्षर pa. So, pa is for parishram, hard work. Pa जो है परिश्रम। So, it describes the people, no, karmis, who work really hard. तो यह जो है बता रहा है कि कर्मी किस प्रकार बहुत कठिन श्रम करते हैं। So, pa is the parishram, heavy, no, work. पा जो है बहुत ही कठिन श्रम को इंगित करता है। And when one works very hard, he works so hard that pena. So foam starts coming out. How hard he is working. तो जब व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है तो फ से फेन, उसके मुख से फेन निकलने लगता है। Ba stands for is a frustration. What is the word for ba? Anyone knows? He gets frustrated. I am working so hard and nobody appreciates my work. I am working so hard and I don't get enough money. Bertata. Okay. बा से फिर उसका जो है हताशा होती है क्योंकि उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। So he is working hard. He is, renouncing everything, but he's not getting as much as they expected. तो वो बहुत परिश्रम करते हैं, सब त्याग करते हैं, लेकिन जो उसकी आशाएं रखी हैं वो उसे प्राप्त नहीं होती। Sometimes he works in some company and he works for so long and sorry, we don't have money to give you. You don't get salary. कई बार कोई व्यक्ति कंपनी में बहुत लंबे समय तक कार्य करता है लेकिन कंपनी बोलती है कि हमारे पास धन नहीं है आपको वेतन देने के लिए। So it's a frustration. उसके कारण से हताशा होती है। Then bhayam, a fear comes. What will I do? तो उसके बाद भय की उत्पत्ति होती है और भय करने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। So he's fearful. How will I maintain my family? How will I enjoy myself? तो उसे भय होता है कि मैं अपने परिवार का पोषण कैसे करूँगा, मैं आनंद कैसे प्राप्त करूँगा। Always fearing. Oh, he has more than me. How can I get that? I need more than him. तो भय होता है कि फलाना व्यक्ति के पास मुझसे ज़्यादा है, मुझे उससे ज़्यादा कैसी चीज़ें मिल सकती हैं। And then mrityu. He dies. मृत्यु, उसकी मृत्यु हो जाती है। So that's the pavarga. That's the
experience of a person who works for instant gratification. यह पवर्ग है और जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है उसका यह अनुभव रहता है. The Vedas, Krishna, he talks about we should not get into pavarga. We should actually get into apavarga. कृष्ण वेद के माध्यम से बताते हैं हम पवर्ग में नहीं परंतु अपवर्ग की ओर प्रयास करना चाहिए. Don't work hard like an ass. हमें गधे की तरह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. Don't get into all these nonsense, so then you become frustrated, then you become fearful. इस तरीके से कार्य करने की जरूरत नहीं है कि हमें हताशा मिले और भय प्राप्त हो. Life is very short and it is to be used properly. जीवन जो है बहुत अल्प है और इसे बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए. So whatever work we do, we should do it without really expectation that it's for me to enjoy. जो भी कार्य करते हैं वो इस आशा से नहीं करना चाहिए कि उसका जो फल है वो मैं उसे भोग करूँगा. Rather, we should see this is for me to express my service to the Lord. परंतु हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि यह भगवान को संतुष्ट करने के लिए एक सेवा है. When we accept it like that, then it's very easy to actually perform it, to do it. और यदि हम इसको इस रूप से करेंगे तो उस कार्य को करना सरल होगा. An example, we see now Kolovecha Sridhar. हम उदाहरण देखते हैं कोलावेचा श्रीधर का. He had nothing. He was just living in some cottage made out of leaves. उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल वो पत्तों से बनी हुई कुटिया में रहते थे. And all he was doing, he made some leaf cups, put some flowers, and selling it to the people who wanted to do Ganga Puja. और उनका कार्य यही था कि कुछ पत्तों से राउंड बना के उसमें फूल रख के लोगों को बेचते थे जो गंगा पूजा करने जा रहे हैं. And he would sell for very, very little money. और बहुत ही कम धन प्राप्त होता था इससे उनको. But he was always very fixed to his duty. किंतु वह अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही बद्ध थे. He was not thinking that, okay, if I go somewhere and start selling wholesale or do something else, I get more money. उनका चिंतन इस प्रकार नहीं था कि कहीं और जाके होलसेल में विक्रय करूं तो ज़्यादा धन प्राप्त होगा. He was very satisfied. And whatever he got, half he used for Krishna. तो बहुत ही संतुष्ट थे वो और जो भी उन्हें प्राप्त होता था उसका आधा भगवान की संतुष्टि के लिए उपयोग करते थे. So, and he was fixed in that. Therefore, he had no problem. और इसमें वे दृढ़ थे और इसलिए उनको कोई समस्या नहीं थी. Our problem is that we get money in our hand and then thinking, oh, I should give half to Krishna, to devotees. No. They didn't work hard. I worked hard, so then it's mine. लेकिन हमारी समस्या ये है कि जैसे ही धन प्राप्त होता है तो हम सोचने लगते हैं कि आधा भक्तों को और भगवान को दे दूँ. नहीं, उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं की, मेहनत मैंने की इसलिए ये मेरा है. We get attached to it. हम उससे आसक्त हो जाते हैं. And because of the attachment, we become blind. We don't know what is the right thing to do. और आसक्ति के कारण हम अंधे हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि वास्तविकता में क्या करना चाहिए. And we don't know that when we have more than we deserve, anyway we'll lose it. हमें यह ज्ञान नहीं है कि यदि हमें आवश्यकता से अधिक है तो वैसे भी वो हमसे छीनने वाला है. But that way it's going to be more painful. लेकिन उससे हमें ज़्यादा कष्ट होगा. Because if we don't have something, then there is a less chance of getting attached to it than having it, get attached and then lose it. यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो उससे कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन कोई वस्तु हमारे पास है और उससे आसक्ति है तब वह छिन जाएगी तो कष्ट अधिक होगा. So if we can accept that, then our life can be
much more peaceful. तो यदि हम इसको स्वीकार कर सकते हैं तो हमारा जीवन शांति में होगा. So that's apavarga. यह अपवर्ग है. You just work as much as needed to fulfill your duties. तो हम अपवर्ग में उतना ही कार्य करते हैं जो हमारे कर्तव्य निर्वाह के लिए आवश्यक है. Another example we can see the father of Srila Prabhupada. हम उदाहरण दे सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के पिताश्री. He had a cloth shop, उनकी कपड़े की दुकान थी. and then he would spend like I think 2 hours a day selling. तो वह 2 घंटे उस दुकान में विक्रय करते थे. Whatever he sells, he gets some profit from it, and that was enough to maintain the family. और 2 घंटे में जो भी वो बेचते थे उससे उनका परिवार चलता था. He wasn't thinking, if I be selling for 4 hours, I get double. If I do 8 hours, I will get 4 times that. उनका विचार इस प्रकार से नहीं था कि अगर मैं 4 घंटे कार्य करूँगा तो दोगुना प्राप्त होगा, 8 घंटे प्राप्त करूँगा तो चौगुना प्राप्त होगा. The problem is, he may get more money by sitting in the shop selling, but he has no time for the family. उससे समस्या ये है कि वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और धन एकत्र कर सकते हैं, लेकिन उनको परिवार के लिए समय नहीं बचेगा. So he may develop, he may get more money, but his relationships will be ruined. तो उनको हो सकता है अधिक धन प्राप्त होगा, लेकिन संबंध जो है वो खराब हो जाएगा. So one should always balance it. तो हमें इसके बीच में समन्वय बैठाना होगा. You make whatever you need to make to maintain your family, but spend time with your family. तो परिवार का पालन करने के लिए जो कार्य करना है वो तो करना होगा, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने का भी होना चाहिए. Don't waste your time in pavarga. तो जीवन जो है पावर्ग में नहीं बिताना चाहिए. So we see Hiranyakashipu, he is doing that. हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ऐसा कर रहे हैं. He is working hard. बहुत मेहनत कर रहे हैं. He is standing on the tip of the toes, and hands extended up, watching up, and then for tens of thousands of years. देख रहे हैं कि पैर के अंगुष्ठ पर खड़े होकर हाथ ऊपर करके ऊपर की ओर दृष्टि करके हजारों वर्ष तक वो ऐसे ही खड़े हैं. So it's very austere. It's very hard work. बहुत ही कठिन श्रम है, बहुत तपस्या है. But what he wants? He wants to enjoy. लेकिन उनकी इच्छा क्या है? भोग करनी है. So he is wasting his time. इस प्रकार वो अपना समय व्यर्थ. But he doesn't know that because he is blinded by the attachment. I will be the most powerful in the universe. लेकिन हिरण्यकशिपु इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो आसक्ति कि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, उससे अंधे हो गए. So these are the plans of the materialists. That's the problem. They have many plans, but they will not work. तो ये भौतिकता और जीवन ऐसा ही है कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं लेकिन वो कार्य नहीं करती. And if you tell them, they don't want to hear. यदि हम उन्हें बताएंगे तो वो सुनना भी नहीं चाहते. Most people, they have to experience it. ज़्यादातर लोगों को अनुभव करना होगा. So they go through it, they figure out it doesn't work. Again they will try going for it. Again they will figure out it doesn't work. And it goes on and on until they become frustrated with their attempts and give up pavarga. तो ज़्यादातर व्यक्ति अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं. वो प्रयास करते हैं, अपनी योजना कार्य नहीं करती है, फिर प्रयास करते हैं, फिर हताशा होती है, और इस तरीके से बार बार हताश होने के रहते हैं. So we should take example from this text. हमें ये उदाहरण से सीखना चाहिए. Not to follow, not to do something which is unnecessary. ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो आवश्यक नहीं. It is also in our society that sometimes devotees, they try to do some more austerity than
then what was asked. हमारी संस्था में हम कई बार देखते हैं कुछ वक्त जितना उनको बताया जाता है उससे अधिक तपस्या करते हैं. There is no need for it. इसकी आवश्यकता नहीं है. Srila Prabhupada, no, he gave us the important essence of what austerity we should follow, and the rest of the time we should be engaged in devotional service. श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सार रूप में बताया कि कौन सी महत्वपूर्ण तपस्याएं हमें करनी है और उसके अलावा हमें भक्ति में सेवा में लगना चाहिए. Now, Srila Prabhupada, in many places he mentions that the austerity for a devotee, it's sufficient if he very strictly follows the four aggluttic principles. श्रील प्रभुपाद ने कई स्थान पर बताया है कि भक्त के लिए तपस्या यही है कि 4 नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करें. And then chants minimum 16 rounds daily. और उसके बाद कम से कम 16 माला जप करें. That's sufficient. यह पर्याप्त है. But it's not easy. लेकिन यह आसान नहीं है. So once that the devotee can control that, then success will come. यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो उसको सफलता प्राप्त होगी. So we should focus on that. We should not try to develop some other cities or powers. City or some power. हमें इस पर ध्यान देना है, कुछ और आवश्यकता नहीं है. Srila Prabhupada, he told one story that there was some in one village, one boy, he went to study with some yogi. श्रील प्रभुपाद जो ध्यान देते हैं कि एक गांव में एक बालक था जो योगी के साथ पढ़ाई करते थे. So and then he was with a yogi for many years, like 10-20 years. तो वह योगी के साथ 10-20 वर्ष था. So he comes back to the village as a man. और वह गांव में लौट के आता है एक वयस्क के रूप में. And everybody, wow, yeah, you're yogi now. No, what did you do? What did you practice? What did you learn? तब उससे आश्चर्य रूप में पूछ लेते हैं, तुम योगी बन गए हो, क्या किया तुमने, क्या सीखा? And yeah, I learned a siddhi from the yogi, from my master. फिर उस वयस्क ने बताया कि हाँ, मैंने एक सिद्धि सीखी है अपने गुरु से. It took me, not the whole time, it took me 20 years to learn this, but I mastered the siddhi. वो बता रहा था कि 20 वर्ष लगे उस सिद्धि प्राप्त करने में, लेकिन उससे सिद्धि प्राप्त हो गई. And what siddhi did you get? लोग पूछने लगे, कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? I can walk on water. उसने बताया कि मैं जल पर चल सकता हूँ. So? Yeah, I can walk on water. I can cross the river walking on the water. वो बताने लगा कि मैं नदी चलकर पार कर सकता हूँ. And then was the one man hearing this, yeah, 2 paisa siddhi. तो एक व्यक्ति ने कहा कि 2 पैसे की सिद्धि है. How 2 paisa? I can take a boat for 2 paisa across the river. पूछने लगा कि 2 पैसे की कैसे सिद्धि है? तो उसने बताया कि मैं 2 पैसे से नाव में बैठकर नदी पार कर सकता हूँ. So what's the use? Wasting time just to develop this kind of siddhi. Yes, you may get some people who will admire you. Maybe they will become your disciples. तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है? हाँ, हो सकता है आपके कुछ अनुयायी बन जाए, जो आपके शिष्य बन जाए. But how will that save you from birth and death? किंतु यह आपको जन्म मृत्यु से कैसे बचाएगा? It doesn't. वो नहीं बचा सकता. So ultimately, it's useless. इसलिए अंततः तो यह व्यर्थ है. It's just a show. केवल दिखावा. So we should give up that idea that I want to show myself as better than anybody else. तो हमें यह धारणा कि हम दूसरों से अच्छे हैं, ये दिखाने की धारणा छोड़ देनी चाहिए. That I know something which nobody else knows. कि मैं दूसरों से कुछ अधिक जानता हूँ जो कोई नहीं जानता. The pratishtha. प्रतिष्ठा की इच्छा. You should give it up. इसलिए हमें त्याग करना चाहिए. And surrender to the Lord.
और भगवान की शरण ग्रहण करने से Dasa, dasa, and dasa. दास दास और दास। So, that brings success. That makes us able to surrender to the Lord and not to focus on our devotional service. उससे हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Not siddhis, but devotional service. इससे सिद्धि नहीं मिलेगी लेकिन भक्ति मिलेगी। So, that's what we should do. We should practice. इसका अभ्यास करना है। So learn from this. Hiranyakashipu, he went the wrong way. इससे हमें शिक्षा लेनी है कि हिरण्यकशिपु गलत पथ का चयन किया। And as the story develops, then we will see that he could not protect himself. He could not achieve what he wanted. तो जैसे हम आगे देखेंगे कि वह अपनी रक्षा नहीं कर सका। Hare Krishna. Any questions? Yes. We see that Hiranyakashipu went after Siddhi. Nowadays we see in our own organization there is a lot of work going on, motivational talks, and if we tell that why not pure Krishna consciousness, and people say that it's the way to bring the people to Krishna consciousness. Then we see it's a drift actually. So, but if we talk about drift, then we say no. Then we can. So, what's your view on this actually? Because I feel it should be straight Krishna consciousness because Prabhupada did that way. His followers during his time. So, what is? You translate? मोदी का प्रश्न है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे संस्था में भी बहुत सारे प्रेरणादायक भाषण जो है और भाषण जो है वो प्रसिद्ध हैं और लोगों से जो बोला जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बोलते हैं कि लोगों को भक्ति को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन मोदी का मतलब है कि ये वास्तविक सिद्धांत है उससे डेविएशन है, तो उसको आपका क्या मतलब है? See, the devotees, the early devotees in America, in the beginning of the movement, then they didn't know much, not much philosophy. जैसा कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब अमेरिका में शुरुआती दिनों में प्रचार किया तो वे लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। They only knew that Srila Prabhupada tells them, just go out and preach Hare Krishna, chant Hare Krishna, and you will be sublime. Sublime, happy. उनको केवल यही ज्ञान था कि बाहर जाना है, कीर्तन करना है, कृष्ण के बारे में बताना है और इस तरीके से आनंद मिलेगा। So with this knowledge, they went out and they made so many devotees. इस ज्ञान के साथ वो बाहर गए और बहुत सारे भक्त बनाए। Why? Because they were so surrendered to their guru. क्यों? क्योंकि वे गुरु के प्रति शरणागत थे। So the consciousness was to please Guru, to follow the instruction, to do what they could do. तो उनकी जो चेतना थी कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनकी शरणागति देना है और जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। And it was very much appreciated and they were very successful. और इसकी बहुत सराहना हुई और बहुत सफल भी हुई। But later on, when somehow became more sophisticated लेकिन बाद में वो ज़्यादा पुनीत बन गए थे। and taking some help of some like the self-help books. उसके बाद कुछ अलग-अलग पुस्तकों की भी सहायता लेने लगे। Because we cannot just go out and preach. No, we have to see what we can do, and we have to follow some successful people, some corporation. They will tell us what to do. वे विचार करने लगे कि हम ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, कोई सफल व्यक्ति जो है उसके विचारों के अनुसार कार्य करना होगा। But it doesn't work. लेकिन वो कार्य नहीं करता। Because we lose the main point, which is Krishna consciousness.
क्योंकि उससे जो मुख्य बिंदु जो है कृष्ण भावना में वो हो जाता है। So there is no need to look for some self-help books. तो इस प्रकार के स्वयं की सहायता करने के लिए कोई पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। Everything we need to know is in Bhagavad Gita, it's in Bhagavatam. जो भी हमें जानना है वो भगवद गीता और भागवतम में है। So we have to follow the instructions of Srila Prabhupada. तो हमें श्री प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करना है। We have to follow exactly what he wants us to do. हमें वैसा ही करना है जैसे वे हमसे अपेक्षा करते हैं। And then the success will be there, imminent, immediate. तो उससे जो है निश्चित रूप से तुरंत हमें सफलता प्राप्त होगी। Like an example, I can tell you, you see that Srila Prabhupada very much endeavored to create education for children in the form of gurukuls. उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद ने बालकों की शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित करने का प्रयास किया। The education in the public schools he calls as a slaughterhouse. जो बाहर की जो शिक्षा पद्धति है प्रभुपाद जी उसको कत्ल खाने का। So his desire was to develop gurukulas and the training of children that way. उनकी इच्छा थी कि गुरुकुल की स्थापना की जाए और बच्चों को उस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। Right? 40 years later, where are the gurukulas? 40 वर्ष हो गए लेकिन कहाँ है गुरुकुल? Everybody's in the slaughterhouse. सब कोई कत्ल खाने में भेज रहा है बालकों को। So how do we follow the instruction? Where did we go wrong? तो हमने कहाँ आज्ञा का पालन किया? हम कहाँ गलत थे? It's something to think about. ये कुछ विचार करने योग्य वस्तु है। So we have to be very conscious now to know the mood of our Guru and to do things such a way so that we can please him. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम गुरु के भावनाओं को समझें, हृदय को समझें और उन्हें प्रसन्न करें। When you please Guru, then through parampara you please Krishna. जब हम गुरु को संतुष्ट करते हैं तो परंपरा के माध्यम से कृष्ण को भी संतुष्ट करते हैं। To please Guru, you please him by following his instructions without any interpretation. गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा जो है बिना किसी बदलाव के पालन करना। That's the way. यही विधि है। Okay? There you go. Gauranga. Any other question? आत्मा और काल दोनों शाश्वत है, दोनों में डिफरेंट क्या है? आत्मा एंड काल both are Atma and काल time time. Okay. both are eternal. What is the difference between them? Both are Eternal. What Okay. is the difference? See, the Atma, this is Jiva. So Jiva is eternal. आत्मा जीव है और जीव शाश्वत है। Time is a kala. Then no, it's a representation of Krishna in the material world. तो काल जो है भौतिक प्रकृति में भगवान का प्रतिनिधित्व है। It's the phenomenal world, means material world, which something is created, sustained, and destroyed. तो भौतिक जगत में कोई भी वस्तु है उसकी सृष्टि होती है, पालन होता है और संहार होता है। That's controlled by time. और यह जो है काल द्वारा नियंत्रित है। But the time is not present in the spiritual world. लेकिन यह काल आध्यात्मिक जगत में नहीं है। So the time, the source of the time is eternal, but the time in the material world is not eternal. तो काल का जो स्रोत है वह शाश्वत है, लेकिन इस भौतिक जगत में जो काल है वह शाश्वत नहीं है। This was misunderstanding of Hiranyakashipu. तो यही हिरण्यकशिपु की भ्रांत धारणा थी। Because what's happened? When Mahavishnu breathes out, then all the universes become manifested.
जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं. But when he breathes in, which is very, very long time, it takes 311 billion years, he breathes in and then everything becomes suspended. लेकिन जब वे फिर से सांस वापस खींचते हैं, जो कि बहुत लंबे काल के बाद 311 बिलियन वर्षों के बाद करते हैं, सब कुछ अप्रकट हो जाता है. Brahma dies, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है. right? And then all the jivas get absorbed in the Mahatattva, and then they will be there waiting for another breathing out of Mahavishnu. और सारे जीव जो है महातत्व में विलीन हो जाते हैं और वे इंतजार करते हैं कि जब फिर से महाविष्णु श्वास छोड़ेंगे. So then what's the point? So the time stops at that time. उस समय जो है रुक जाता है. So time manifests when Krishna wants it to manifest. तो समय प्रकट होता है जब कृष्ण उन्हें प्रकट करना चाहते हैं. But the jiva never cease to exist. तो जीव जो है उसकी मृत्यु नहीं होती. So even when the jiva is absorbed in Mahatattva, so it's in deep sleep. जब वो महातत्व में विलीन हो जाता है तो वह गहन निद्रा में है. Waiting for another opportunity to get some material body so that it can enjoy whatever desires it has. वह इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे दूसरा शरीर मिलेगा उसकी भोग की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए. So, but the jiva, because it's covered by the ahankara in the material world, it doesn't know that it's eternal. लेकिन जीव जो है अहंकार द्वारा आच्छादित है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं है कि वह शाश्वत है. When the jiva gets the material body, the jiva thinks, this is me, I am this body. जीव को जब भौतिक शरीर प्राप्त होता है तो वह सोचता है कि वह भौतिक शरीर ही है. When the body dies, I die. जब शरीर की मृत्यु होती है तो सोचता है कि मेरी मृत्यु हो गई. But we know that's not true. लेकिन हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है. So then the jiva is eternal. But for the jiva to realize that, it has to get rid of the ahankara. तो जीव शाश्वत है, लेकिन उसका इसका अनुभव करने के लिए अहंकार से मुक्त होना होगा. Then the jiva actually understands, I'm not this body, I am the spirit soul, I am the Atma. और जब ऐसा होता है तो उसे समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ. And I'm part and parcel of the Lord, and my duty is to serve Him. और मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है. That's the true position of Atma. तो यह आत्मा की वास्तविक स्थिति है. But Hiranyakashipu didn't think like that. हिरण्यकशिपु इस तरीके से नहीं सोच रहे. His point was, he wanted to enjoy, because he thought that he is God. वो चाहता था कि वो भोग करे, क्योंकि वो सोचता था कि वही भगवान है. And then, as we see later, he will be suffering for that. और जैसा कि हम बाद में देखेंगे तो इस धारणा के कारण उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ. Okay? Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय निताय गौर परमानंद.